Good morning, students. In the last lecture, we have completed your electrical comparator, that is linear variable differential transducer. So in this lecture, we will cover optical comparator. Okay. So this is the last topic of your comparator or last classification, that is optical comparators. So let us see what is optical comparators. Working principle of optical comparator is based on the laws of light reflection and refraction. So in each and every comparator, like your mechanical, pneumatic, electrical, the working principle is different. So here in optical comparator, optical, the word optical means light source, a source of light. So here optical comparator is based on the laws of light refraction as well as refraction. What is reflection and what is refraction, we will see in details. Okay, so it is basically work on the principle of optical laws. Okay, so what are those optical laws? So according to the law of reflection, the angle of incidence and reflection are equal when the reflection occurs on a plane surface. Means if we provide a light source on a perfectly plane surface like mirror, then your angle of incidence and your angle of reflection remains same. Angle of incidence means, suppose the sun rays are coming from sun towards the earth and we placed one mirror, then that plane mirror should reflect the same induction rays in same angle. Okay, so this phenomenon is known as same reflection phenomenon. Okay, when the plane is exactly plane, the surface is exactly plane like mirror. That is the angle of, that is the angle between incident ray and normal to the mirror. Theta is equal to the angle of reflected ray and normal to the mirror surface. Means angle of incident with respect to your mirror surface and angle of reflection with respect to your mirror surface remains same, and the total angle between incident ray and reflected ray will be twice theta. Okay, so your total angle will be twice theta because incident as well as your reflection angle having same value, so that's why it is equal to twice theta. Refer figure 2.11a. So let us see what is refer 2.11a, principle of reflection. What does the figure show? Here is a one normal plane. This is your mirror. Some ray is incident at this particular mirror with angle theta with normal, and this incident ray having this theta angle with normal is also equal to your angle of reflection theta with normal when the surface is your perfectly plane surface like mirror. Okay, so when your mirror is placed at exactly plane surface, then your incident as well as reflected having same angle in between them. So that's why the total angle in between incident ray and reflected ray will be theta plus theta is equal to twice of theta. Okay, now the second case, we tilt the position of mirror by alpha, some angle. This is your plane surface and we tilt this particular mirror at an angle alpha. Then what happen, this incident ray comes with angle theta with normal, so your normal is also shifted by alpha. Okay, because your mirror is tilted by alpha degree, so that's why here you are getting incident ray is equal to theta plus alpha, and similarly you are getting your reflected angle theta plus alpha. Okay, because we add this alpha in your incident ray as well as your reflected ray because here the position is tilted by
an angle alpha. Let us see. Now, if the reflecting surface mirror is tilted through an angle alpha, then normal also moves through an angle alpha. Means if we tilt our position of mirror, then your normal is also tilted by the same position, because your normal is always perpendicular or exactly 90 degree to your perfect plane surface. ओके, ये जो आपका नॉर्मल रहता है ये हमेशा आपके प्लेन सरफेस के एग्जैक्ट राइट एंगल में होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री में होता है। तो अगर ये मिरर कुछ 10 डिग्री अल्फा, मतलब 10 डिग्री से अगर रोटेट हुआ, या फिर भी समझ लो अल्फा की वैल्यू 10 डिग्री है, तो आपका ये आपका जो पर्टिकुलर नॉर्मल है वो भी आपका 10 डिग्री से मूव हो जाएगा। ओके, बिकॉज ये सरफेस जो भी है इसके हमेशा परपेंडिकुलर में ही नॉर्मल रहेगा। ओके, so that's why here we add this theta plus alpha as well as this theta plus alpha. Then, as shown in figure 2.11b, the angle between incident ray and normal ray become alpha theta plus alpha according to the law of reflection between angle reflected ray and normal should be equal to the angle between incident ray and normal. Therefore, angle between reflected ray and normal should also be theta plus alpha. Thus, total angle between incident ray and inducted ray will be twice theta plus alpha. Don't need to make this thing complicated. Just understand your angle, like here theta and theta. You are getting twice theta. Here theta plus alpha, and theta plus alpha gives you twice theta plus alpha. Okay, thus that is twice theta plus twice alpha. Thus there is a increase of twice alpha in the total angle by double magnification is obtained. Okay, so it means what? Whenever it is in normal position or plane surface, we are getting twice theta angle in between incident and reflected ray, and if we tilted the position of that particular mirror, then your thus an increase of angle twice alpha is happen, and your magnification is doubled. Okay, so let us see what is the construction and working. So here just they explain the incident ray and reflected ray and the angle between them. Now see what is the construction and working. So here construction is mentioned. A beam of light passes through a graticule which is engraved with a scale. फिगर देख लेते हैं पहले, फिगर देख लो। फिगर में क्या दिया है? प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल कंपैरेटर. Here one job is placed. Over that job a plunger is put. प्लंजर को कनेक्ट किया हुआ है एक मूवेबल मिरर. ठीक है, जॉब को हमने प्लंजर के कॉन्टैक्ट से कनेक्ट किया है, और जॉब के प्लंजर के ऊपर हमने एक मूवेबल मिरर रखा हुआ है. वो यहाँ से स्लाइड हो सकता है इस डायरेक्शन में एज वेल एज दिस डायरेक्शन. ओके, देन यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से कुछ रेज इंसिडेंट हो रही है. ठीक है, अब वो इंसिडेंट रे इस मिरर के ऊपर हम इंसिडेंट कर रहे हैं, बट उससे पहले उसको कंडेंसर के थ्रू पास किया गया है, देन ग्रेटिक्यूल के थ्रू पास किया गया है, देन ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू पास किया गया है. मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन एनी सोर्स ऑफ लाइट, एक सिंपल सोर्स ऑफ लाइट 60 वाट बल्ब हम ले सकते हैं, और उसके थ्रू ये कंडेंसर, ग्रेटिक्यूल, ऑब्जेक्टिव लेंस, इन सब के फंक्शंस हम देखेंगे. उसके थ्रू ये आकर आपके मूवेबल मिरर के ऊपर आ रहे हैं, और फिर यहाँ से उनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ पे एक फिक्स मिरर लगाया हुआ है. तो यहाँ से जो रेज इस सरफेस पे आएंगे मिरर पे, तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस सरफेस पे जाएंगे, और यहाँ पे फिर से एक मिरर लगाया हुआ है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होके वो इस सरफेस पे आएंगे. ठीक है, और फिर इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होके वो बाहर की तरफ जाएंगे. तो बाहर की तरफ जाते वक्त भी उनको एक लेंस प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे एक स्केल दी गई हुई है लेंस के बाद, और आई पीस रखा हुआ है. तो इस आई पीस से हम यहाँ पे स्केल के ऊपर वैल्यू और रीडिंग जो भी आपको मिल सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम रीडिंग लेते हैं. तो ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके जॉब
का जो भी डायमेंशन साइज है हम यहाँ पे इस स्केल पे मेजर कर पाएंगे. So first and second magnitude twice magnification will be happen with this help of this first objective lens and this secondary objective lens. So let us see how does it works. A beam of light passes through a graticule which engraved with the scale. So green light हम पास कर रहे हैं graticule से. The rays from monochromatic source of light are incident on movable mirror through condenser. So कंडेंसर के थ्रू ये मूवेबल मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी. दिस रेज आर पास टू द फिक्स मिरर बाय रिफ्लेक्शन. सो यहाँ से रिफ्लेक्शन होके फिर फिक्स मिरर की तरफ आपकी रेज मूव करेंगी. From where they are again reflected to the first mirror and then to the eyepiece. This double reflection gives you the magnification. Means they are again reflected to first movable mirror and then eyepiece. मतलब यहाँ पे मूवेबल मिरर पे ऊपर एक बार रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पे आई पीस पे एक बार रिफ्लेक्शन होगा. सो दैट विल गिव्स यू अ कंप्लीट मैग्निफिकेशन. If a standard job is placed under the plunger, the reference position can be fixed. एक स्टैंडर्ड जॉब हमने अगर इस प्लंजर के नीचे रख दिया तो हम आपको एक स्टैंडर्ड जॉब मतलब क्या एक स्लीप गेज समझ लो. यहाँ पे हमने एक स्लीप गेज रख दी 50 mm हाइट की. तो आपको 50 mm का सेटिंग मिल गया. आपने उसको सेट कर लिया. अगर हम यहाँ पे 50 mm की स्लाइड रख के उसको सेट कर सकते हैं और उसके बाद फिर जो भी साइज हम इसके ऊपर रखेंगे उसके हिसाब से आपका रीडिंग आपको यहाँ पे वैरी मिल जाएगा. Now, if an undersized or an oversized job is placed instead of standard reference job, तो एक हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस जॉब रख के उसको 0 पे सेट कर लिया था और या फिर आपके जो भी वैल्यू रिक्वायर्ड है उसके ऊपर सेट कर लिया था. उसके बाद फिर हम आपका जॉब जो अंडर साइज है या फिर ओवर साइज है उसको प्लेस करके उसका डायमेंशन और चेंज इन डायमेंशन मेजर कर सकते हैं. Okay. Then due to difference of size of job, the plunger movement will be caused and the movable mirror is to deflect. Therefore, the variation can be measured by graticule position through the eyepiece. So ये graticule की position जो भी change होगी वो हम eyepiece के through उसको measure कर सकते हैं. ओके. सो सिंपल है. रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल यूज किया हुआ है. एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का कंडेंसर और ग्रेटिकुल से पास करके लेंसेज के थ्रू उसको मूवेबल मिरर पे रिफ्लेक्ट किया जाता है. फिर मूवेबल मिरर से वो फिक्स मिरर की तरफ रिफ्लेक्ट होता है और फिर यहाँ से लेंस के थ्रू आपको आईपीस पे स्केल पे रीडिंग मिल जाता है. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर पर्टिकुलर ऑप्टिकल कंपैरेटर. डायग्राम सिंपल है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी सिंपल है. अगर एग्जाम में पूछा जाता है ऑप्टिकल कंपैरेटर तो आप ये दोनों डायग्राम पहले एक्सप्लेन करोगे. देन यू शुड एक्सप्लेन दिस डायग्राम. देन एडवांटेजेस ऑफ द ऑप्टिकल कंपैरेटर and disadvantages also. Okay, so let us see what is the advantages of optical comparator. These comparators have few moving linkage and hence not subjected to wear and tear due to friction. So mechanical linkage कम है, मूविंग लिंकेज कम है, इसकी वजह से इसका वियर एंड टियर कम है, फ्रिक्शन कम है. Wide range of measurement can be possible. So wide range of measurement is possible on particular comparator. No parallax error. Then high magnification, so suitable for precision measurement. So here we are getting higher magnification because by changing your optical lenses we can change the magnification also. So here you can getting higher magnification, so precise measurement is happen. It has self-illuminated scale, hence reading can be taken without influence of room lighting. So self-illuminated scale because here light incident is happening, that's why it does not require any influence of room lighting for the measurement. You can measure this thing in dark room also. Okay. So this is all the advantages of your optical comparators. Now let us see what are the disadvantages. On need of high magnification, more heat from the source of light may causes the setting to drift. When we require higher magnification, higher light or a high source of light is imparted on that particular surface. That's why the heat is more, and due to more heating of the surface, you are getting wrong results. So this may be happen.
An electric supply is necessary to operate the source of light, so continuous source of electricity is required in this case. So that is also one of the most important disadvantage. Costly and bulky in design. So this is the most costly and most bulky design because the parts you see in the figure are very short, but in practice they are having very lengthy in size. Instrument on which the scale is viewed through the eyepiece of microscopes are not convenient for continuous use, because after some time that scale may be, the indication of that scale may be worn out. So it is very difficult to measure the actual value with the help of this scale. Okay, so these are the some advantages as well as disadvantages of your optical comparator. So your last topic of this unit comes comparison of all comparator: mechanical comparator and pneumatic comparator, then mechanical comparator with optical comparator, then elect comparison between mechanical and electrical comparator. Okay, and comparison between comparator and measuring instrument. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और कंपैरेटर के बीच में जो भी है डिफरेंस है वो भी. सो ये सारे कंपैरिजन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाएंगे. इसके इसमें जो भी स्लीप गेजेस के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स है, आपको तो न्यूमेरिकल्स पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी हम अगर टाइम मिलता है तो इसको कवर कर लेंगे. ठीक है, कि स्लीप गेजेस मेजरमेंट कैसे किया जाता है. बट यू शुड फोकस ऑन दिस कंपैरिजंस आल्सो बिकॉज it may be happen in 2012 when I was in third year engineering. That time the total metrology and quality paper is come with the differences between different devices. So most of the paper is covered with the differences. So you should focus on your this topic also. I will explain the difference in mechanical as a pneumatic comparator, mechanical and optical comparator, and mechanical and electrical comparator in your next lecture. We will cover this part, and then we complete your first unit, and I will give you the assignment for this unit. Okay, so this is all about today's lecture. I hope you understand. If you have any problem, then please ask me in the group.